GST is goods and services tax, right? It is charged by the government on production and sale of goods and services. So if you are a producer of any good, any physical good, you have to pay tax to the government, right? The tax is imposed when the goods leave your factory. So at the time the goods leave the factory, that time a tax is charged on that. That tax is imposed on the producer. But what producers do is that they pass on these tax to their customers. They collect this tax from their customers, right? So goods leave the factory and reach the distributor or wholesaler or retailer. Then retailer, distributor, wholesaler sells that goods to end consumer. While selling, he again charges tax. That is GST. So GST on a physical good is charged at two different instances. One at the time of production and second at the time of sale. Is it clear, guys, or not? Unar, have you got me what I said? Yes, sir. So goods and services tax is a tax charged on production and sale of goods and services, right? It is charged on what? On production and sale of goods and services. It is imposed on producers and sellers who pass on this tax to their customers. This is the reason why GST is an indirect tax. Why it is an indirect? Because it is paid by consumers indirectly to the government. Consumers do not pay tax by going to the government. No. Consumers pay the tax to the sellers or producers and they pass on this tax to the government. So tax is imposed on producers and sellers. Whose liability is to pay the tax? It is the liability of producers and sellers. But they do not pay it from their own pocket. They collect it from their customers and pay it to the government. Am I clear? That is, GST is ultimately paid by customers or consumers with the price of the goods or service to sellers and producers who deposit it with the government. Am I clear? Note down this much, guys, and then we go ahead. Mohammed, we started with GST today. It is in your accounts, right? Yes, sir. So I just explained Yes. about GST. Please note down this fast. Okay, sir. One second, guys.
Did I give you one form? Give it to with the price of the goods or services while purchasing it, purchasing them from, okay, that's it, to sellers and producers. While purchasing them from sellers and producers. GST is applicable on production and sale of goods and services. Written guys this much? Have you understood this? Yes, sir. GST is of three types. One is IGST. It is charged on interstate, that is from one state to another, transactions of sale. It is called integrated goods and services tax. The other is STSD, SGST, that is state GST.
And the next one is CGST. It goes in the pockets of state government. The state government of the state where the transaction took place. And CGST is central GST, which is charged on again intrastate transactions of sales, but it goes in the pocket of central government. So this is there are three types of GST: IGST, SGST, and CGST. Note down this first, then I explain you this. Manvi, why you're not attending the class offline? Your mic is not on, Manvi. I cannot hear you. And you are very late. तो मैंने मीटिंग ओपन जल्दी करी थी बट मैं एंटर ही नहीं हो पाई थी। आई डोंट नो। नहीं, आप ऑफलाइन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लासेस? हाँ, start noting this down, guys. I've already explained it. Manvi, you have to attend the classes in offline mode, right? यस सर। Today you have micro class also. यस सर। Have you noted down with this much?
Yes, sir. Now, as GST rates means tax rates we are talking about, right? On different category of goods, government charges different rates of tax. The tax rates are 0%, means there is one category in which whatsoever goods fall, they are not charged any tax at all, like newspapers, like agricultural goods. On that, there is no GST. That is 0% GST. Then 5%. The other rate is 5%. So when you go to a restaurant, you actually pay the restaurant bill along with GST. And that GST charged is 5%. Then we have 12%. Then we have 18%, and then we have 28%. For maximum goods, the GST rate is 18%. 28% is for the luxurious goods or goods of comfort. Like when you purchase television, refrigerator, car, bike, everywhere you have to pay GST at the rate of 28%, which is too high actually. Right? If you're purchasing a good of rupees 100, you ultimately land up paying 120 rupees to the vendor. Clear? GST rates are different for different categories of goods, and they are 0%, 5%, 12%, 18%, and 28%. Zero percent tax implies no tax, which is on newspapers, milk, and other agriculture products. 28% implies or is the rate applicable for goods and services of comfort and luxury, like white goods. White goods are electronic goods, cars, bikes, etc. In case of integrated GST, the rate of GST, the entire GST goes to the central government and it is recorded in IGST account, right? But in case of intrastate sale or purchase transaction, what should be the tax rate? Half of that is recorded as SGST and half of that is recorded as CGST. So suppose the tax rate on computer mouse is 18% and mouse are being sold by or are being a mouse is being sold interstate, right? Let's say the price at which the
seller wants to sell that mouse as rupees 200 and GST rate is 18%. So 18% of 200 is rupees 36. That entirely would be recorded in IGST account. But if the same mouse is sold by a trader of a state to a trader of the same estate, that is the transition is intrastate transition, then out of rupees 36 half, that is rupees 18 would be recorded as SGST or would be recorded in SGST account and remaining rupees 18 would be recorded in CGST account. Am I clear? Have you got this, Yash? So in case of IGST, the entire tax code is recorded in IGST account, but in case of intrastate transactions, half of the tax is recorded as SGST and half of the tax is recorded as CGST. Correct? Tax rate will not change. And that is what actually GST has done. That is why GST was brought. GST was brought to unify tax rates across the country. So whether you are selling mouse in Indore or you are selling mouse from Indore to a trader of Maharashtra, the rate would be same. Am I clear? Earlier it was not so. Different state governments had different tax rates for different items, for different goods, but now it is not so. The tax rates across all the goods across the country are same. So whether you have your dinner in a restaurant in Indore or you have it in Mumbai or in Lucknow or in Ahmedabad, everywhere you have to pay the same tax. That is 5%. Am I clear? Have you got this, Manvi, Hunar and Mohammed? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So in case of interstate transactions, the entire GST as calculated on sale price of a good or a service is recorded in IGST account. However, in case of intrastate transactions, half of the GST is recorded in SGST account and remaining half in CGST account. One more thing, guys, for purchase of goods or services by a trader
input GST account is used as for the trader, goods or service, the good or service is coming in the business. Whereas for sale of goods or services by a trader, output GST account is used as for the trader, the good or service is going out of the business. Have you understood this, Punar, Yes, sir. Mohammed, and Yes, Malvi? sir. Yes, sir. So for GST, a trader who deals in interstate as well as intrastate, there would be six different GST accounts. So if a trader deals in, so guys, this is how a dealer who deals interstate as well as intrastate, he will have these six accounts in his books of accounts, right? These three is for purchase, and these three are for sales. In case he purchases, listen to me, guys, all look at here. In case he purchases only interstate but sells intrastate, right? Means he does not purchase intrastate nor he sells interstate. He purchases interstate but sells intrastate. Means he purchases from different state than where he is, but he sells within his state only. In that case, he will have this account in his books, right? And these two accounts in his books. Am I clear or not? I hope you're understanding, guys. Right? Yes, sir. Right. Now note down this, guys, fully in case you have not noted it down yet. Yes, sir. GST is a value added tax.
That is, it is charged on value addition done by each seller in the total chain of goods or in the total supply chain through which a good moves from the to the end consumer. Note down, guys, this and then I explain it to you. In the overall supply chain. Then have you noted down this? इसका मतलब ये है गाइस कि जितनी भी बार एक गुड किसी एक से दूसरे के पास जाता है, बिकता है, because we know that between manufacturer and the end consumer there are a lot many people. All those are called middlemen, whether they are wholesalers or distributors or dealers or retailers, right? So every time the good is sold by one to another, GST is charged. But government does not want GST on the total sale amount. Government does not want GST on sale amount at which good is sold by one to another. It wants GST only at the final price. And final price is the one which is charged to the end consumer. So for that, what government has done is that they have made GST a value added tax. It means at every point of sale in the whole supply chain, government wants GST only on the value which a trader has added to that good. For example, I purchased goods for rupees 100 from Karthik, and let's say GST rate is 10%. I'm taking 10% for easy calculation. It means Karthik sold that goods to me for rupees 110. The same good I sold to Aditya for rupees 150. The tax is same, 10%, right? It means I would be collecting from Aditya 150 plus 15, that is 165, right? So how much value I have added to that good? I have added the value of rupees 50 to that good. Because the value of good which I purchased from Karthik was rupees 100. On that, rupees 10 was imposed as tax. And that is why I had to pay rupees 110 to Karthik, right? How much, if I remove tax from that price which I paid, how much ultimately I added before selling the good to Aditya is 50 rupees. That is why I decided my selling price to be rupees 150. On 150 again 10% would be charged. That is 15%. It means from Aditya I will collect 165 rupees. 150 plus 15. But government does not want tax in such a manner. Government wants tax only on the value that I have added to the product. Okay. Now you will understand this better through an example. Do not write anything, guys.
फार्मर देगा, फार्मर के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, कॉटन पे देगा, जिससे जिससे जिसको बेच रहा है उससे ले लेगा, उसकी जेब से कुछ नहीं लग रहा, राइट। लिखिए, अभी लिख क्यों रहे हो? ना किया मैं लिखने के लिए, अभी मैं चेंज कर दूंगा, हो सकता है। Okay, look at here, guys. Everyone, farmer has produced cotton which he wants to sell at rupees 100. However, the government came in between and demanded 10% GST on that cotton. 10% of rupees 100 is rupees 10. So the cotton producer sold his cotton for rupees 110. That is 100 plus 10. So that he could collect rupees 10 more over and above the price what he wanted, and that extra amount that he has collected could pay to the government. Am I clear? Okay. For the Yes, sir. manufacturer who purchased cotton from the farmer, cost was rupees 110. That is this one, right? To convert this cotton into an apparel, into a piece of apparel, he had incurred cost of 200. Am I clear? Then he also added his own profit, 100. So this is how the price at which he wants to sell the apparel to a customer is rupees 410. Again, government came in between and asked for 10% more. 10% of 410 is 41. So ultimately, how much consumer is paying? Consumer is paying rupees 41. Am I clear? The government, and after the apparel was sold to the end consumer for rupees 410. After which this would not be sold anymore. Why? Because here
The one who purchased apparel from the manufacturer is end consumer. This is what I am assuming. Are you understanding, guys, or not? Okay. It means the Sure. final price of the good is rupees 410. The final price at which the good was sold to the or the apparel was sold to the end consumer is rupees 410. Government wants 10% on this. Government wants 10% on this, and that is rupees 41. Now, in this price of cotton is also included, right? However, what the farmer did, he already paid how much to the government is rupees 10. How much farmer has paid to the government? Rupees 10. Because he collected from the manufacturer how much? 110. He wanted only rupees 100. So the remaining amount of rupees 10 which he has got from the manufacturer, actually he has collected for the government. So tax to government which has gone here is rupees 10. Am I clear? Now what this manufacturer is doing is that he is charging again tax at the rate of 10% on the selling price at which he wants to sell the apparel, and that is rupees 410. So 10% of 410 is 41. This is what the manufacturer is charging to the end consumer. मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर को कितना चार्ज कर रहा है टैक्स रुपीज 41 क्योंकि ये फाइनल सेल है ये जो अमाउंट है फाइनल सेल है इसलिए इस पे जो टैक्स है वही गवर्नमेंट चाहती है सिर्फ लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कितना कलेक्ट किया रुपीज 41 गवर्नमेंट के पास रुपीज 41 ही जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कितना पहुंच चुका है रुपीज 10 So from this manufacturer, government does not want rupees 41, but wants 41 minus 10, that is rupees 31. So tax paid to government by the manufacturer is 41 minus 10, that is rupees 31. Are you understanding it, guys, or not? फाइनल प्राइस कैसे चेंज होगी फाइनल प्राइस तो रुपीस फाइनल प्राइस 410 है एंड कंज्यूमर को जो बिल बना के दिया मैन्युफैक्चरर ने उसमें क्या लिखा शर्ट 410 एड जीएसटी 41 so net price 451 so including GST the price of the shirt is 451 but ultimately what is its selling price it's 410 वैल्यू एडेड पर ही लग रहा है बता रहा हूँ कैसे लग रहा है वैल्यू एडेड अभी वो हमने बात नहीं की टैक्स वैल्यू एडेड पे ही लग रहा है राइट देखिए कितना कितना वैल्यू एडिशन किया है इसने 300 राइट 300 का 10% कितना होता है 30 रुपीज राइट ठीक है वो एग्जैक्टली 30 रुपीज 40 रुपीज नहीं आएगा आना 40 रुपीज सही है पर मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है वो भी अपन क्लियर करते हैं राइट आपका क्या डाउट है बताइए क्या नहीं समझ में आया आपको हाँ मैन्युफैक्ट नहीं मैंने ये भी बोला कि जो एंड प्राइस है कंज्यूमर के पास जो एंड प्राइस पहुंच रही है उस पे जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को चाहिए एंड कंज्यूमर को जितने मैंने कुछ सेल किया राइट उस पे जो टैक्स है एंड कंज्यूमर को कितने में सेल किया हमने गुड्स 410 में
तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए अल्टीमेटली? 41। 410 का 10%, 41, राइट? लेकिन मैन्युफैक्चरर ने एंड कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया? 41 किया। गवर्नमेंट को चाहिए 41 ही, पर गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ₹10 पहुंच चुका है। तो अब ये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? सिर्फ ₹31। ये समझ में आया? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स ले रही है। मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया एंड कंज्यूमर से ₹41 का टैक्स, पर वो गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है? 41 माइनस 10, ₹31। मतलब ₹10 का टैक्स जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को पे कर चुका है इनडायरेक्टली। कैसे पे किया उसने गवर्नमेंट को? थ्रू फार्मर। वो उसने डिडक्ट कर दिया अपने उस टैक्स में से जो उसने कलेक्ट किया। कलेक्ट कितना किया था एंड कंज्यूमर से? उसने 41, राइट? फार्मर को कितना पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर? ₹10। सो रिमेनिंग जो अमाउंट है वही सिर्फ वो गवर्नमेंट को पे करता है। 300 पे टैक्स लगना चाहिए, पर फिर इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम देखिए, हम इस पे भी टैक्स लगा रहा है, इसलिए वो ₹1 का डिफरेंस आ रहा है। इसने कितने गुड्स बेचा? अल्टीमेटली 100 का। बेचा कितने में? 110 में। आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ मैं, राइट? अल्टीमेटली ये इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में? ₹100 का। पहले कुछ नहीं था, फिर उसने कॉटन प्रोड्यूस किया, उसको सेल करना चाहता है कितने में? 100 में। तो वैल्यू एडिशन बाय द फार्मर इज ₹100। करेक्ट? ये क्लियर है? ठीक है। अब इसने कितना वैल्यूएशन किया? 300। तो दोनों ने मिला के जो एंड प्रोडक्ट बना हमारा शर्ट, उस पे दोनों ने, फार्मर और मैन्युफैक्चरर मिला के कितना वैल्यूएशन किया? 400। तो 400 का 10% गवर्नमेंट को जाना चाहिए, 40 जाना चाहिए। यहाँ ₹1 ज्यादा जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इस पे भी टैक्स लगाया है। टैक्स पे टैक्स लग गया। देखिए, ये जो 410 आपको दिख रहा है प्राइस, जिस पे 10% टैक्स लगा, इस 410 में ये भी इंक्लूडेड है ना, राइट? तो वो अब इतना डिफरेंस आता है क्योंकि इसको, ये क्यों आता है? क्योंकि इसको ऑपरेशनली आप नहीं कर सकते। जब जब एक गुड के सप्लाई चेन में बहुत सारे मिडिल मैन हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट कि कौन से को कितना टैक्स पड़ा, कौन से ने कितना टैक्स दिया। अभी यहाँ पे जैसे हमको ये दिख रहा है क्लियरली कि इसने ₹110 में खरीदा। हमें ये भी पता है कि इसने कितना टैक्स पे किया, ₹10 का फार्मर को, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करती है? बोलती है सीधे आपने जो अपने परचेस में गुड्स दिया है, जो टैक्स दिया है, उस टैक्स को आप अपनी सेल के टैक्स में से लेस कर दो और बचा हुआ हमें दे दो। एम आई क्लियर? राइट? तो इट इज क्लोज टू वैल्यू एडिशन ओनली। अभी इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है वैल्यूएशन में? ₹1 का। ₹100 जो फार्मर ने किया उसका 10%, ये वैल्यूएशन फार्मर का था, और ये वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरर का था। 200 प्लस 100, 300। सो देयर इज टोटल वैल्यू एडिशन ऑफ ₹400। 400 का 10%, 40। गवर्नमेंट के पास जा रहा है 41। उसको ऑपरेशनली आप 40 पे नहीं ला सकते। क्लियर है ये बात? तो गवर्नमेंट इसलिए कहती है कि आपने जो अपने सेल पे टैक्स दिया है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, उसमें से आपने अब वो टैक्स लेस कर दो जो आपने परचेज पे दिया। वो कितना दिया परचेज पे? 10। तो 41 माइनस 10 हमने कर दिया 31। मैन्युफैक्चरर विल पे टू द गवर्नमेंट। ये क्लियर है यहाँ तक? फिर से बोलिए। हम्म 100 प्लस 200 प्लस 400 आता ना? हाँ, वही कह रहा हूँ। ₹1 का डिफरेंस जो है इस 110 की वजह से आ रहा है, क्योंकि इस 110 पे भी हम 10% लगा रहे हैं ना भाई। 110 is part of 410, and we are charging on what? On 410. It means we are charging tax on tax. But government does not want tax on tax. Government wants कि आप हमें एंड प्राइस जो था उस पर टैक्स चाहिए। तो एंड प्राइस कितना है? 410। उसका 10% 41 गवर्नमेंट को चाहिए। तो 41 में से जो उसने परचेज पे टैक्स पे किया उसको हमने लेस कर दिया। पर परचेज पे हम
हमें लेना चाहिए था ये प्राइस 100, पर देखिए ये प्राइस कैसे पता चलेगा? बिल कितने का बन रहा है यहाँ पे? ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम। गवर्नमेंट के पास डेटा इनवॉइस का जाता है, जो जीएसटी इनवॉइस बनता है उसका डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, राइट? तो इनवॉइस पे जो अमाउंट उसके हिसाब से कैलकुलेशन चलता है, राइट? ये तो यहाँ तो फिर भी ठीक है, जब सर्विसेज हो तो और प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सर्विसेज को वैल्यू करना बहुत मुश्किल काम। सेम सर्विस एक डॉक्टर दे रहा है 500 रुपए में, दूसरा डॉक्टर दे रहा है 1000 रुपए में। इट इज डिफिकल्ट। तो बेटर है कि वो जो नेट प्राइस आया उस पर फिर वो चार्ज करते हैं, राइट? सो हुनर मोहम्मद एंड sorry, Hunar and Manvi, have you understood this? So, Yes, sir. 2 मिनट रुकिएगा, अभी भी चार्ट मत बनाइएगा, राइट? इसको पढ़िए पहले एक बार। जो मैंने आप लोगों को पूरा समझाया वही यहाँ पे लिखा है गाइस। गवर्नमेंट वांट्स टैक्स ऑन द एंड प्राइस एट विच द गुड इज सोल्ड टू एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर को जितने में जिस प्राइस में गुड्स बेचा उस प्राइस पर ही गवर्नमेंट से टैक्स चाहती है। However, government does not wait until end sale takes place because it is very difficult for government to know कि end sale कहाँ हो रही है। एंड कंज्यूमर कौन है कैसे पता चलेगा? जैसे इंदौर से एक गांव का बंदा 4-5 शर्ट खरीद के ले गया, तो वो लग रहा है कि वो खुद पहनेगा, पर अपने गांव जाके उसने फिर किसी और को बेच दी है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट गाइस? तो इसलिए गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर तक का वेट नहीं करती, क्योंकि एंड कंज्यूमर को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल द गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स, बट गवर्नमेंट वांट्स टैक्स ऑन द एंड प्राइस ओनली। So how to do that? For that, government gives liberty to every seller to deduct the tax which he has already paid on purchase of the same good from the tax which he has collected on sale of it. मैंने जितने रुपए में कुछ सेल किया उस पे जो टैक्स मैंने कलेक्ट किया, उस टैक्स में से मैंने जितना ऑलरेडी पे कर दिया है अपने सप्लायर को जब उससे खरीदा था, उसको लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा वही मैं गवर्नमेंट के पास जमा करूँ।
ये समझ में आ रहा है? And that is the reason why government collects tax on the value added, on the value added by each seller. इसलिए इस सेलर से गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया? सिर्फ 31। अब समझ में आया कंसेप्ट आप लोगों को वैल्यू एडिशन का और टैक्स का, राइट? इट वुड नॉट बी एग्जैक्टली एज वी कैलकुलेटेड, क्योंकि वैल्यू एडिशन इसने कितना किया है? 300 रुपए। तो उस पर 10 रुपए का, सॉरी 10% मतलब 30 रुपए लगना चाहिए, पर ये कितना पे कर रहा है गवर्नमेंट को? 31 का। तो 1 रुपए का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस 410 में, राइट, 110 इंक्लूड किया। वो करना पड़ेगा ऑपरेशनल। हैव यू गॉट दिस, हुनर एंड मानवी? Yes, sir. Yes, sir. वन सेकेंड, हाँ। नाउ यू कैन नोट दिस डाउन। ये जो टैक्स फार्मर ने पे किया है, वो उसके लिए क्या था? आउटपुट टैक्स था। उसका इनपुट टैक्स कुछ भी नहीं है, राइट? इस मैन्युफैक्चरर की बात करें तो उसके लिए आउटपुट टैक्स है 41 और इनपुट टैक्स है कितना? ₹10। जो उसने परचेस, कॉटन परचेस पैसे उसने पे कर दिया था कॉटन मैन्युफैक्चरर को, मतलब फार्मर को। तो नेट टैक्स वो कितना गवर्नमेंट को पे करेगा? 31 रुपीज। मतलब नेट टैक्स हम कैसे निकाल रहे हैं? आउटपुट माइनस इनपुट। इज इट क्लियर ऑल गाइस? ये समझ में आ रहा है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। लिखिए यहां से। ये पैराग्राफ आप सबने लिख लिया, राइट? ये वाला मानवी और हुनर आपने लिख लिया ये? Yes, sir, लिख लिया।
So you all have noted down this much, guys, right? Hunar, Manvi, have you noted down this? Yes, sir. Yes, sir. Guys, when I say government here everywhere, it is actually GST authorities or GST authority. Please add this here.